हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच हॉर्टिकल्चरिस्ट। आज के लेक्चर में मैं आपको ग्रीन हाउसेस के टाइप्स, उनके डिज़ाइंस किस तरीके के रहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने लेक्चर 9 में आप सबसे बात की थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। तो अब मैं बात करने जाऊंगी टाइप ऑफ ग्रीन हाउसेज एंड डिज़ाइंस ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, लेक्चर 10। अब शुरू करते हैं हम। ग्रीन हाउस टाइप्स बेस्ड ऑन द शेप। For the purpose of classification, the uniqueness of cross-section of the greenhouses can be considered as a factor. The commonly followed type of greenhouses based on the shape are: first one is lean-to type greenhouses, then second one is even span type of greenhouse. In case of lean-to type greenhouse, it is made against the side of an existing building and using the existing structure of a particular house. Therefore, it is usually attached to a house but may be attached to any other building. The roof of the building is extended with the appropriate greenhouse covering material and the area is properly enclosed. इस लीन टू टाइप ग्रीन हाउसेस के स्ट्रक्चर में जनरली हमारी जो एक साइड की वॉल है वो बिल्कुल जो आपका हाउस है उसकी वॉल रहती है, मतलब वो ग्रीन हाउस की वॉल नहीं है। जैसे कि आप इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि जो लीन टू टाइप स्ट्रक्चर है या इवन फैन टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें एक साइड जो है कवरिंग जो है एक साइड की वो वॉल की है। जनरली इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द सदरल रीजन्स और सदरल साइड। Then, the lean-to type greenhouse is limited to single or double row plant benches with a total width of 7 to 12 feet. Yes, ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी रह सकती है कि इसके जो इस टाइप के ग्रीन हाउसेस में जनरली 2 रो ही प्लांट बेंचेस की आ सकती है और उनकी विड्थ जो रहती है लगभग 7 से 12 फीट के बीच में रहती है। इट शुड फेस बेस्ट डायरेक्शंस फॉर एडिक्वेट सन एक्सपोजर। जब भी आप इस टाइप के ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स को बनाएं तो हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो सन की जो डायरेक्शन है, एडिक्वेट सन का जो रेज है या सन एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में रहे। एडवांटेजेस यही हैं कि इट इज़ यूजली क्लोज टू अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर आप बिल्कुल हाउस की वॉल के साथ या किसी बिल्डिंग की वॉल के साथ बना रहे हैं, ऑब्वियसली you have sufficient electricity, water, and heat. This type of structure is least expensive structure, and the structure makes the best use of sunlight and minimizes the requirement of roof support. As जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा रूफ रहता है वो बिल्कुल जो आपकी बिल्डिंग है उसके रूफ के साथ टच में रहता है, और जो आप पॉलीथीन या उसकी कवरिंग करेंगे तो बिल्कुल उसके हाउस के साथ में करेंगे उसकी कवरिंग को। तो डिसएडवांटेज यही रहती है कि जब आप इसको किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के साथ अटैच करके बना रहे हैं उसके एक वॉल को, तो आपके पास लिमिटेड स्पेस रहेगा, लिमिटेड लाइट होगी, लिमिटेड वेंटिलेशन रहेगी और टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो भी लिमिटेड रहेगा। सेकेंडली, द हाइट ऑफ द सपोर्टिंग वॉल्स लिमिट्स द पोटेंशियल ऑफ द डिज़ाइन। अब देखिए क्या होता है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर रेज कर रहे हैं तो आप उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू योर डायमेंशंस आप उसको बना सकते हैं। बट जब आप उसको एक बिल्डिंग के सहारे पे बना रहे हैं उसके एक वॉल को, तो उसमें आपको हाइट का हमेशा एक इशू रहेगा क्योंकि उसका पोटेंशियल साइज जो है वो ऑलवेज आपको एक हाउस के साइज के अकॉर्डिंगली तैयार करना पड़ेगा। थर्ड, टेम्परेचर कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज द वॉल दैट ग्रीन हाउस इज बिल्ट ऑन may connect the sun's heat, or while the translucent cover of the greenhouse may loses the heat rapidly. तो इसमें से जो है टेम्परेचर कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि एक साइड जब आपकी वॉल के किसी भी दीवार से अटैच होगी, ऑब्वियसली वहाँ एक डोर की ओपनिंग रहेगी। जब डोर की ओपनिंग रहेगी तो ग्रीन हाउस से हीट का लॉस होना रैपिड रहता है। Second, even span type of greenhouse. The even span is standard type and full size structure. The two roof slopes are equal pitch and width. You can see in the pictures.
the even span type of greenhouses. The design of this type of greenhouse is generally small in size and are when constructed on the level ground. It is attached to a house at one gable end and can accommodate 2 or 3 rows of the plant benches. The cost of an even span greenhouse is more than that of the cost of a lean type of greenhouse, but it has more flexibility in design and provides more number of space or more plants for such type of greenhouses. Then, because of its size and greater amount of exposed glass area, the even span will cost more to heat. And secondly, the design has a better shape than a lean-to type for air circulation to maintain uniform temperature during the winter heating season. इस टाइप के स्ट्रक्चर की खासियत यही रहेगी कि इसमें एयर का जो सर्कुलेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, स्पेशली आपके विंटर डेज में. Several single and multiple span types are available for use in various regions of India, and for single span type, the span in general varies from 5 to 9 meter, whereas the length is about 24 meter and the height varies from 2.5 to 4.3 meter. जो आपके इस तरह के स्ट्रक्चर इवन स्पैन टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को अकोमोडेट कर लेंगे प्लांट बेंचेस को एज कम्पेयर टू अर्लियर वन. देन अनइवन स्पैन टाइप ऑफ ग्रीन हाउसेज. आप देख सकते हैं अनइवन के नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इस तरह के जो ग्रीन हाउसेज हैं वो आपको हिली टेरेन में देखने को मिलेंगे. बिकॉज ऑफ देयर अनइक्वल विड्थ, दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर मेड अवेलेबल टू द साइड स्लोप ऑफ द हिल. Then, ridge and furrow type of the greenhouse. The design of such type of greenhouses uses 2 or more A-frame greenhouses. You can clearly see in the pictures that there are 2 or more than 2 frames of greenhouses like shape of A. Then the side wall is eliminated between the greenhouses, which results in structure with a single large interior. जो इसमें साइड वॉल्स होंगी उसका कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, बस 2 ही इसमें बिल्कुल एंड टू एंड पे 2 ही वॉल्स रहेंगी. The consolidation of interior space reduces labor, lowers the cost of automation, improves personal management, and reduces fuel consumption as there is less exposed wall area through which heat escapes. इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हीट का एस्केप होना बहुत ही कम है, बहुत ना के बराबर है, और जिसमें जितना ज़्यादा अंदर का स्पेस रहेगा इस तरह के स्ट्रक्चर्स में उससे ऑटोमेशंस की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस रहेगी. और पर्सनली कोई भी अगर ग्रीन हाउस फार्मर उसको मेंटेन कर रहा है तो उसकी मैनेजमेंट भी इजी है. In case of ridge and furrow type of structures, the snow loads must be taken into the frame specifications of these greenhouses since the snow cannot slide off the roof as in case of individual freestanding type of the greenhouses. होता क्या है कि जब आप रिज और फरो टाइप के ग्रीन हाउसेस की बात कर रहे हैं तो जो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ए टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन जो इसमें फ्रेम स्पेसिफिकेशन रहती है तो उसमें आपकी जो स्नो है दैट विल नॉट स्लाइड ऑफ, मतलब वो बिल्कुल स्लाइड ऑफ नहीं करेगी रूफ से, वो इंडिविजुअली फ्री और स्टैंडिंग रहेगी हर एक ग्रीन हाउस के ऊपर. बट प्रॉब्लम ये है कि वो वहीं पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. These type of structures are specifically more common in northern countries of Europe, for example, and in Canada. And generally, we can say that these type of structures are well suited for the Indian conditions too. Now, the fifth one structure is about sawtooth type of greenhouses. As these are also similar to ridge and furrow type of greenhouses, you can clearly see in the pictures the similar way of constructions of these type of greenhouses. बट देर इज़ अ नेचुरल वेंटिलेशन प्रोविज़न. आप देख सकते हैं साइड में वेंट्स है सॉटूथ टाइप में, बट इन केस ऑफ रिच एंड फरो टाइप नो वेंटिलेशन इज देयर लाइक फॉर द साइड वेंट्स. स्पेसिफिक natural ventilation flow path develops in a sawtooth type of greenhouses. Now, the quincer type of greenhouses more common in hilly terrains, hilly areas. The quincer type of greenhouses.
You can say in case of mid-hill condition, the quinset type of greenhouses are best suited for the growth and development of the vegetable crops. As this type of a greenhouse where the pipe arc is or the trusses are supported by pipe purley running along the length of the greenhouse. जनरली जो कवरिंग रहती है इस टाइप की ग्रीन हाउस की वो पॉलीइथिलीन की रहती है और कम एक्सपेंसिव रहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स देन द अदर वंस. In case of quinset type of greenhouses, these are connected either in standing style or arranged in an interlocking region furrow type base. या तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा या फिर जो फरो की तरह 3 से 4 स्ट्रक्चर्स में ये अरेंज होएगा एक इंटरलॉकिंग की फॉर्म में. In the interlocking type, truss members overlap sufficiently to allow a bed of plants to grow between the overlapping portions of the adjacent houses. Okay. In case of single large cultural space, this exists for a set of houses in this type of, or we can say in quintet type of greenhouses, that is better adapted to automation and movement of the labor. ज़्यादा स्पेस होने की वजह से अगर आप इसको रिज ऑफ फरो के स्टाइल में इंटरलॉकिंग कर रही हैं तो ऑटोमेशंस और लेबर की मूवमेंट जो है इजी होगी. जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मेड ऑफ सम कंपोनेंट्स. तो उन कंपोनेंट्स की बात मैं करूँगी कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के क्या कंपोनेंट रहते हैं. यू कैन क्लियरली सी इन द पिक्चर्स देयर इज अ आर्क at the top of the greenhouse, then trusses below the arc, then column, the pipes one, and the foundation pipe. Some ventilators, you can say ridge ventilators, gutter, for the gutter, there is a gutter support, and lateral ventilator. Purlins are there. Now, the greenhouses types based on the utility. These are classified into 2 types. First one you can say greenhouse for active cooling. Second one is for greenhouse for active heating. Firstly, I will talk about the greenhouse for active heating. During the night time, air temperature inside the greenhouse decreases, right? And then to avoid the cold bites to plant due to freezing, some amount of heat has to be supplied to the plant. Okay. The requirement for heating greenhouse depends on the rate at which the heat is lost to the outside environment. मेन एम जो हमारा एक्टिव टाइप के ग्रीन हाउसेज में रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स, जब आपके विंटर्स रहती है तो एक्सेसिव कोल्ड इंजरीज का या आप कह सकते हैं कोल्ड बाइट्स टू द प्लांट और कोल्ड स्ट्रेस प्लांट को हो जाता है. जब ये किस लिए हो रहा है, जब प्लांट के जो वातावरण है, प्लांट का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो एडवर्स हो रहा है. मतलब प्लांट को वो टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा जिसमें वो ग्रो कर सकें जिस रेट पे, क्योंकि हीट का जो लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है डे टाइम में. वेरियस मेथड्स आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस द हीट लॉसेस यूजिंग डबल लेयर पॉलीथीन, thermopane glasses, to use heating systems such as unit heaters, central heat radiant heat heaters, and solar heating system. ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सारे के सारे हीट लॉस को रिड्यूस करने के उपाय हैं. लाइक आप डबल लेयर पॉलीथिलीन को भी यूज़ कर सकते हैं, थर्मोपेन ग्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हीटर्स लगा सकते हैं, रोड सोलर हीटिंग सिस्टम्स को अवेल करा सकते हैं अपने ग्रीन हाउसेज में. देन सेकेंड वन इज ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग. What happens during the summer season? समर्स में एक्सेसिव और जो हमारा टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो उस हीट को, जो एक्सेसिव हीट है उसको उससे कोप अप करने के लिए प्लांट को एक कूल एनवायरनमेंट चाहिए रहता है और चाहिए होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है तभी सर्वाइव कर पाए. तो इसके लिए ये जो हमारे मॉडर्न टाइप के ग्रीन हाउसेज रहते हैं जिनमें इवेपोरेटिंग कूलिंग फैन और पैड सिस्टम रहता है, तो इस टाइप के ग्रीन हाउसेज जो है एक्टिव कूलिंग के लिए बनाए जाते हैं. नाउ द ग्रीन हाउस इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इट परमिट्स रूफ ओपनिंग ऑफ 40% एंड सम प्लेसेस नियरली 100%. ये डिपेंड करता है आपके हीट के इनटेक पे ऊपर कि कितना टेम्परेचर जो है आपका राइज कर रहा है ड्यूरिंग द डेज ऑफ समर्स. Now the greenhouse types based on the constructions. First one is wooden frame structure, second one is your pipe frame structure, and third one is truss frame structure.
These are some pictures of wooden framed structures. You can say the structure is made from the wooden frames, then pipe framed structures, or you can say pipe frame greenhouse. The various components of such type of structures are rafter, struts, cross tie, columns, knee brace, side post, transom steel, silly, sash bar, curtain wall, eave, purlin, vent heater, ventilator, and ridges. To avoid or to retain only 40 to 45% of the heat. Then the truss frame structures. The various components of truss frame structures are ridges, ventilators, purlins, side walls, truss, anchors up for the support post. You can clearly see the picture for the various components of the greenhouse. Now the greenhouse type based on the covering material. So very important for the greenhouse is based on the covering material, because no control over the environmental factor like temperature, light, and relative humidity, then you have to modify your greenhouse. मतलब आपके अपने ग्रीन हाउस को इस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को के ऊपर बेटर परफॉर्म कर सके। किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो द कवरिंग मटेरियल हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। वी कैन से जितना भी जो आपका कवरिंग मटेरियल है, चाहे पॉलीइथिलीन हो, पॉलीप्रोपिलीन हो, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो, तो कितनी वो सनरेज को एंटर करने दे रहा है, कैसे वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ये डिपेंड करता है आपके पूरे के पूरे कवरिंग मटेरियल के ऊपर। द कवरिंग मटेरियल फॉर द ग्रीन हाउसेज मे बी ऑफ ग्लास, plastic film, or rigid panel type of greenhouses. First one is glass greenhouse. You can see the glass greenhouse, particularly made of glasses for the greater interior light intensity. Then plastic film greenhouse made up of the main structure or the main component of this is polythene, polyester, polyvinyl chloride. We can say the covering material of such type of greenhouses. These are cheap type of greenhouses. The cost is very low for such type of greenhouses. The main disadvantage, we can say the main disadvantage for these type of greenhouses is because of their shorter life and stabilized film, that we can say ultraviolet stabilized film can last only for the 4 years. You can clearly see the type of structures of the greenhouses. Now the rigid panel greenhouse. Polyvinyl chloride rigid panels, fiberglass reinforced plastic, acrylic and polycarbonate rigid panels. These are the generally made covering materials of rigid panel greenhouses. These are such type of material are more resistant to breakage and light in intensity is uniform throughout the greenhouse as compared to other ones. In case of रिजिड पैनल ग्रीन हाउसेज, जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया कि जो हमारे ग्रीन हाउसेज हैं इस टाइप के, देखिए प्लास्टिक ग्रीन हाउस है, इसकी जो लाइफ है ओनली 4 इयर्स है, बट जो आपका रिजिड तरह का पैनलिंग रहती है उसकी लाइफ लगभग 20 साल तक रहेगी। मेन डिसएडवांटेज इस टाइप के मतलब पैनल्स का ये रहता है कि डार्कनिंग हो जाती है पैनल्स में और सिग्निफिकेंट डेंजर रहता है फायर का। Now, about the construction of the greenhouse. The greenhouse maintains a favorable climate suitable for crop growing. The objective needs to be achieved at an affordable cost. So, the construction of the greenhouse plays an important role for its costing. Therefore, greenhouse is considered to be a semi-permanent structure and should be designed for service life of about 15 to 25 years. जब भी आप ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर को बनाने के बारे में सोचें तो उसकी इस तरीके से सोचें कि उसकी जो लाइफ है लगभग 15 से 25 साल तक रहे। मतलब these are semi-permanent type of structures. So the greenhouse must resist the load due to its own weight, wind load, snow load and crop load.
नाम से ही बिल्कुल स्पेसिफाई हो रहा है कि ग्रीन हाउस में किन किन चीज़ों का, उनकी कंस्ट्रक्शंस के लिए किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए. The maximum recommended live load is about 68 kg per square meter, and to resist a wind velocity of about 100 km per hour for 5 to 5.5 kg per square meter of the material weight. Then the wind load is affected by its wind direction, shape, windbreak, opening. Snow load depends upon the roof slope, snowfall on the ground, single span or multiple span, or whether heated or unheated. The method of constructions for the greenhouse, firstly we can see the foundation, then floor, then frames, and mixing and then fixing of that glazing material, which is made of wooden batten, either plastic ribbons or aluminium profile. You can see the foundation pipe of a greenhouse structure, then the erection of the poles, therefore semi constructed structure of a greenhouse and completed make polyhouse. Then varying structures for divergent climates are: first one greenhouse for year-round production, second one net house mainly for summer season, then walk-in tunnels mainly for winters. You can see the trench technology at Leh and Ladakh. Then off-season vegetable cultivation under walk-in tunnels clearly mentioned in the picture. मोस्टली कुकर बिट्स को ही हम इस तरह के जो टनल्स है वॉक इन टनल्स में ग्रो करेंगे, जो आपको ऑफ सीजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. देन वॉक इन टनल्स मेड अप ऑफ ग्रेनाइट पिलर्स clearly seen in the image. The plastic low tunnel technology for northern plains during the winter months, especially for the cooker bits. You can see the row covers for short duration crops. First one is granite pillar net house. Second one is granite pillar poly house. Third one is wooden poly house. And fourth one is GI pipe or poly house. Then this one is the low cost poly house. Then poly house made up of wooden, known as wooden framework, जिसमें wooden का काम किया गया है. Then you can see the bamboo frame poly house is made up of bamboos. See the image. Then shade nut houses, particularly for the summer seasons. Then for humid region, rain shelters are there to reduce the incidence of majorly blight. See the image of rain shelter crop and open field crop. A healthy or unhealthy crop. Then the double bed type of rain shelters. And there I have discussed these type of structures. Then thank you for listening and watching my lecture regarding the structures and their orientations. Kindly share and subscribe my channel, which Horticulturist.